Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the success story session. In today's session, we have with us Mr. Tushar, who has cleared RBI Grade B in 2022. That is very recently only. So first of all, heartiest congratulations to you, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much. So today we will learn from him his strategy, that how he came to clear RBI Grade B, and we will know that what hurdles he faced and how he overcame them, and we will be knowing everything about his strategy. So first of all, let's talk about his educational background. So sir, please. Ma'am, I have done my BTech from computer science from Delhi University in 2017. So मैम मैंने डिसाइड किया था I was preparing for UPSC. बट मैम मैंने इसलिए सबसे पहले एसएससी सीजीएल दिया ताकि जॉब ले पाऊँ मैं पहले, उसके बाद मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर पाऊँ. बट मैम एसएससी ने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया, तो उसकी वजह से मैंने एसएससी की वहीं पे पढ़ाई छोड़ दी थी. फिर मैंने यूपीएससी कंटिन्यू किया. तो दिस वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट दिस ईयर एंड आई हैव गिवन आल्सो मेंस दिस ईयर. सो मैम at the same time I have given RBI also in 2021 also and in 2022 also. So this is my second attempt at RBI and second interview. Okay. And it was second interview. So you reached till the interview phase in the previous yes, in 2021 time. also. Okay. So that is really nice. So in today's session, we will understand from him in the phase wise, that in phase one, what was his strategy, in phase two, what was his strategy, and then in interview. So how you kept yourself motivated, because you said you gave UPSC attempts also, for NABARD also, for SEBI also. So it was like the subjects, though they are similar in some way, but the preparation can be very difficult and different. So how you managed such thing? मैम बेसिकली मैम ईएसआई अप्रोक्सीमेटली सब में सेम ही होता है. तो मैम मैंने ईएसआई का सोर्स तो मेरा मेन यूपीएससी प्रिपरेशन ही था. एंड देन मैम जैसे जैसे एग्जाम्स आते थे लाइक फॉर सेबी, then I gave 2 months for SEBI specifically, and then for NABARD 2 months for NABARD, then RBI I gave 2 to 3 months for RBI. So मैम प्रोसेस के साथ फ्लो के साथ चलता गया. मैंने स्पेसिफिकली कोई सोचा नहीं था कि ऐसे ही प्रिपेयर करूंगा मैं ऐसे कर. Okay, so yeah, the exam that is near, you should focus on that one. So we can understand that from him. And now, were you able to clear any of the phase for SEBI or NABARD? Yes, ma'am. I cleared phase 1 for both SEBI and NABARD of 2021 NABARD and 2022 SEBI. Okay, so you were. I missed the phase 2 cutoff of SEBI by 0.5 marks this year. Oh, so it's like if you want to prepare, you can simultaneously prepare for RBI, SEBI, and NABARD, because you cleared, like in the previous phase also. For the RBI Grade B previous exam also, you were able to reach interview, you were able to clear the phase 1 of both the exams of NABARD and SEBI. So it's like manageable if you try to give the exams simultaneously. Yes, ma'am, it can be manageable. Yeah. So let's start with the strategy part now for the phase 1. How were you able to clear, like how were you able to get the GA part? Because it is like too many facts have to be remembered. So first of all I want to clear is that कि हम बहुत लोगों को लगता है कि यूपीएससी एंड आरबीआई की जीए सेम है, तो यूपीएससी वालों को यहाँ पे बेनिफिट है मैम, बट दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट. यूपीएससी इज लाइक मोर एनालिटिकल इन नेचर एंड आरबीआई इज लाइक फैक्ट. तो मैम आरबीआई में ज्यादातर फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके बेसिस पे मैंने स्पेसिफिकली आरबीआई की जीए के लिए फोकस किया था. मैंने नोट्स बनाए थे, उसके ऑनलाइन नोट्स बनाए थे फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. EduTap के मैंने एलपीटी क्लासेस ली थी, जिसमें से आरबीआई न्यूज़, फाइनेंशियल न्यूज़ फॉर 6 मंथ्स के लिए कवर कराया था. तो मैंने उसके स्पेसिफिकली जो क्लास में होता था वो प्लस नेट पे रिसर्च करके एड ऑन भी किया था उसमें से, एंड डिफरेंट टेस्ट सीरीज भी ली थी अदर सोर्सेज की, जिससे कि मेरा जीए प्रिपरेशन एकदम सॉलिड हो जाए. 90% ऑफ माई टाइम ना अप्रैल से मई के बीच वाला मैं मेरा जीए की प्रिपरेशन में किया था. मैंने क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के लिए ज्यादा इतना कुछ किया नहीं था, बस उसके लिए मॉक ही सॉल्व किए थे. Yeah, so you have to gauge that what is your like strong part and what is your weak part. जैसे आपने ज़्यादा टाइम नहीं दिया इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग को, because I hope you had the idea कि वो strong है. तो जीए को ज़्यादा इसलिए क्योंकि उसमें मार्क्स वेटेज भी ज़्यादा है, and then you have to clear. Deciding factor also. Yeah, true. So like you said, for the English, quant and reasoning, you only gave mock test. So Yes. how important are mock test when you are preparing for such exam? Mock tests are very important. मैम आपको different questions के pattern का पता चलता है. For example, I have given many mock tests from many multiple sources. Like I have given 3 EduTap free mock tests. मैम वो exactly उसकी reasoning I think बिल्कुल same pattern की थी जैसे real exam में आई थी. Quant little bit of different,
बट मैम रीजनिंग एंड इंग्लिश वर ऑफ सेम लेवल। सो मैम इससे आइडिया मिलता है, प्लस आपको जीए के क्वेश्चन जो होते हैं वो उस पर रिसोर्स मिल जाते हो और ऐड ऑन कर सकते हो आप उससे। तो मैम डिफरेंट डिफरेंट ये स्ट्रेटजी मिल जाती है, ये नोट्स बना सकते हैं मैम उससे जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं। मैम फॉर क्वांट क्वांट के लिए बेसिकली आपको सॉल्यूशंस के बेसिस पे सीखना पड़ता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप वो वीडियोस वॉच कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, बट मैम मेरे पास टाइम नहीं था और मैम मेरे को ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता था वीडियोस देखना, तो मैम मैंने सॉल्यूशन के बेसिस पे सीखा था ओके, quant को। सो यस दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी कि मॉक्स देकर पता चलता है कि पैटर्न कैसा है, कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, Yes, ma'am. सो दैट यू लाइक प्रिपेयर इन अ मैनर, इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे और ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। पीवाईक्यूज आर आल्सो वेरी हेल्पफुल। सो पीवाईक्यूज यू हैव सीन? Yes, मैम मैंने पीवाईक्यू मैम सारे ईयर्स के देखे थे, लास्ट 3 ईयर्स के। Acha. And then you strategize यस according to मैम। that. Yes, that is great. So for GA, you were having different sources and you made your own notes. You gave a lot of time to GA. यस Reasoning, quant, and English, you just prepared from mock test. Yes, ma'am. Just prepare for mock test. And ma'am, I Okay. have watched puzzles videos also from YouTube. That Okay. is the only thing I have watched videos. Okay. So yes, you have to understand your weak points and your strong points and then work accordingly. So I hope now coming to GA revision session. So have you seen, like, have you given too much time to the GA revision, or you didn't prepare, like you didn't revise much? मैम मैंने 6 to 7 टाइम्स रिवाइज की थी उन 2 मंथ्स के अंदर, जो 2 मंथ्स थे मेरे पास उसके अंदर 6 to 7 टाइम्स रिवाइज की थी मैंने जीए। जैसे फॉर एग्जांपल कि लास्ट नाइट पे अगर जीए आरबीआई न्यूज का सेशन हुआ है तो Hmm. मैं नेक्स्ट डे उसको रिवाइज करके सेकंड सेशन लेता था। मैं Okay. मेक श्योर करता था कि जब भी नेक्स्ट सेशन हो तो उससे पहले मेरी सारी रिवीजन जो बैकलॉग है वो क्लियर हो जाए। तो मैं Okay. यही करता था, तो इसकी बेसिस पे मेरी 6 to 7 रिवीजन फाइनल मई में 15 के बाद हो गई थी। Yeah. So it's like कि आप LPS देखते थे, like the live practice session of EduTap, and यस then you मैम। used to revise also कि क्या जो भी पढ़ा हुआ है, then you used to revise. That is really nice कि revision भी साथ साथ में हो जाए, because there are so many questions that have been taught. So yes, that is the good point कि पढ़ो and then you have to revise at the time also कि बाद में तो करोगे ही revise. So now I think we can move forward to phase two. Now starting with phase two English, like usually the students are very confident कि हो जाएगा ये तो, English के लिए इतना prepare करने की जरूरत नहीं है. How was your strategy? What was your take on that? मैम लास्ट ईयर मेरे इंग्लिश में मैम डिसेंट मार्क्स आए थे, इतने हाई भी नहीं आए थे लो भी नहीं आए थे, डिसेंट मार्क्स आए थे 65 66 समथिंग। Hmm. बट मैम इंग्लिश इज द डिसाइडिंग फैक्टर। अगर आप इंग्लिश में 70+ स्कोर कर देते हो तो मैम ये काफ़ी अच्छा होगा। तो इसलिए मैम मैंने इस बार 50+ टॉपिक्स प्रिपेयर किए थे Hmm. स्पेसिफिकली फॉर एसेज, एंड आई डिड नॉट प्रिपेयर एनीथिंग फॉर प्रेसी और कॉम्प्रहेंशन Hmm. बिकॉज आई हैव रिटन मैनी एग्जाम्स लाइक सेबी एंड नाबार्ड। सो मैम उसमें मेरे को क्लियर हो गया था कि कहाँ पे मेरे को कॉमा लगाना है, कहाँ पे मेरे को Hmm. पंचुएशन एकदम सही से यूज करनी है। तो मैम उससे मैं एकदम क्लियर था। और मैम मैंने कॉम्प्रहेंशन और के आंसर जो है मैंने पॉइंट वाइज लिखे हैं, एंड पॉइंट वाइज में मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। Hmm. Yeah, that is true. Like you have to practice a lot. Even like you are saying that you practice through SEBI and NABARD. कि SEBI और NABARD दिया, so उससे काफी practice हो गया. The aspirants that are new, they should practice by themselves also, because practice is must. कि पता चल जाए, like sir has said कि comma कहाँ लगाना है, punctuation कहाँ लगाना है, उसमें भी बहुत ही minor mistakes हो जाती है, that can be very harmful. Okay, so I have got a question from Prasanna. She's asking, GA, how you filtered GA and how you prioritize the topics of current affairs. Was there something like that? मैम स्पेसिफिकली मैम मैंने फेज 1 की जीए एकदम कंसोलिडेटेड मैनर में प्रिपेयर की थी। मैम Hmm. फिर फेज 2 के लिए मैंने उसमें से जितने भी फेज 2 की इंपॉर्टेंस थी लाइक ईएसआई एंड न्यूज, आरबीआई एंड Hmm. न्यूज, मैम उसको मैंने सेग्रीगेट कर दिया था एक अलग वन नोट में। Hmm. तो मैम मैंने ये किया था दोनों को सेग्रीगेशन करने के लिए। लेकिन फेज 1 के टाइम पे मैंने कंसोलिडेटेड प्रिपरेशन की थी, मैंने रिपोर्ट्स भी, स्कीम्स भी, एंड देन ईएसआई न्यूज में कंसोलिडेटेड तरीके से प्रिपेयर किया था। जिससे कि क्योंकि मैम उस 20 डेज में टाइम बिल्कुल नहीं रहता, आप Hmm. ईएसआई को कर पाओगे, ईएसआई सो वास्ट। Okay. So when you were preparing for phase 1 GA, you were also focusing for the ESI part कि complete preparation हो, cumulative preparation हो, ताकि ESI के लिए उतना time देना ना पड़े phase 2 के time पर. That is true. और जैसे कोई specific topics that you focused on during the preparation for GA and ESI? मैम सबसे ज्यादा मैंने फोकस आरबीआई न्यूज पे किया था, और मैम Hmm. फाइनेंशियल न्यूज पे किया था, Hmm. एंड देन स्कीम्स पे किया था। मैम ये हाँ. 3 मेरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लगते थे कि सबसे ज्यादा। और इस बार भी मैम
रिपोर्ट से आई थिंक मे बी वन क्वेश्चन आया होगा, आई डोंट रिमेम्बर, बट मैम स्कीम से काफी क्वेश्चन आए थे इस बार पे। Huh, true. And now coming back to the English. So as you said, कि English का you prepared, you have practiced, and the practice is a must. Now coming to the ESI. How did you cover RBI circulars of how many months? Can you specify for how many months you have prepared for the RBI circulars or for in general, like reports or schemes also? मैम मैंने आरबीआई की सर्कुलर्स तो प्रिपेयर नहीं किए थे मैम, मैंने Hmm. लेकिन आरबीआई की न्यूज़ आपके सेशन होते थे मैम, तो उसमें आप आपके अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 सेशन हुए होंगे, तो हाँ. मैम मैंने उसमें से वहाँ से आपकी जो पीडीएफ्स आती थी, आपकी जो Hmm. वीडियोस आती थी मैम, उसको मैं कॉपी पेस्ट करके अपने वन नोट पे करता था, देन मैम उसमें ऐड ऑन करता था मैम, मैंने Hmm. इससे गूगल से सर्च करके, तो अच्छा, मैम मैंने that's उसी पे ऐड nice. ऑन किया था, मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा आरबीआई न्यूज़ के लिए। Okay. For GA also, how many months did you prepare? How I many months? prepared for January to May 15. Okay. And for phase 2, I prepared for January to June 15. Okay. That's nice. So now we can move forward to ESI finally. So ESI, how did you prepare for ESI? You said that you had the consolidation, consolidated preparation, but still. मैम ये सही के लिए मैम मैंने दो तरीके से नोट्स बनाए थे। फर्स्टली मैम मैंने टॉपिक वाइज नोट्स बनाए थे, Hmm. जैसे ग्लोबलाइजेशन, जैसे इंटरनेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड Hmm. सोशल इश्यूज, उन सब के ऊपर मैंने मैम टॉपिक वाइज नोट्स बना लिए थे। Hmm. लेकिन लास्ट टाइम पे जो मेरे को रिवीजन के लिए इजी होता, लास्ट के 20 डेज Hmm. में मैंने 100 क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन बनाया था, 100 क्वेश्चन का, टॉप टॉप 100 क्वेश्चन का, जो कि मेरे को लगता था ईएसआई के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने वही प्रिपेयर किए थे टॉप 100 क्वेश्चंस। उसमें से भी मैं लगभग 70 क्वेश्चन ही प्रिपेयर करके जा पाया था, क्योंकि टाइम नहीं बचा था सबकी रिवीजन करने का। Hmm. सो मैम वहाँ से मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला, और मैम उसमें वो क्वेश्चन में इंक्लूडेड थे जो एडुटेक के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस थे, वो भी इंक्लूडेड थे उस क्वेश्चंस के अंदर, Hmm. एंड सम इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चंस लाइक एडुटेक प्रोवाइड क्यू एंड ए पीडीएफ आल्सो। Yes. Okay. So you've mainly focused on the Q&A PDF and the test series that we दिस इज provide, द and डिस्क्रिप्टिव पार्ट। for the descriptive part, and then you made your own notes because that is necessary. You have to remember everything, so that is necessary. Then like a student is asking about the memorization technique that you applied for ESI also, we can say general awareness also, we can say. मैम आई यूज सिंपल सिंपल टेक्निक लाइक मैम मैं रोज सुबह 2 घंटे देता था रिवीजन के लिए। मेरा शुरुआत जो स्टार्टिंग होती थी डे की, मैम 2 घंटे रिवीजन से ही होती थी। मैं Okay, डे बाय डे रिवीजन मैंने कंटिन्यूस किया है अप्रैल से लेकर जून तक, तो उसके अलावा मैंने स्टार्टिंग ही मेरी 2 घंटे रिवीजन से होती थी। that is really nice, huh? So that is a very good technique that when you start your day, just revise whatever you have learned. So एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट मिलता है कि हाँ मुझे इतना आता है, एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड कि अच्छा मुझे इतना करना है. सो दैट इज ऑल्सो ट्रू, एंड ऑल्सो यू हैव सेड दैट यू हैव मेड योर ओन नोट्स of 100 questions. That is not less. इससे practice, I can say practice is a lot, as well as कि पैटर्न पता चल जाता है, इस तरीके से लिखना है, आदत बन जाती है एक. मैम इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी, मैम इन सब का पता चल जाता है। मैम फैक्ट्स भी याद हो जाते हैं, जो हम फैक्ट्स बार बार यूज करते हैं कुछ आंसर्स के अंदर, तो मैम वो भी याद हो जाते हैं। True. Yeah. So that is a great memorization technique कि लिखना पड़ेगा या मतलब अपने sensory organs को use करना पड़ेगा. Now coming to the ESI descriptive typing. So were you practicing through typing? मैंने सोचा तो था टाइपिंग की प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन मैं कर नहीं पाया था बिकॉज ऑफ लेस टाइम। Hmm. बट मैम आई विल एबल टू मैनेज द टाइम। बट मैम इंग्लिश के पेपर में मेरे को थोड़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि मेरे माइंड में था मैं 400 वर्ड का ऐसे लिखना होगा, लेकिन वहाँ पे 600 वर्ड का आ गया था। मैम वहाँ Hmm. पे प्रॉब्लम हुई थी, मैं 400 वर्ड से लिख पाया था वहाँ पे। बाकी बाकी मैंने ESI एंड FM में मैंने कंप्लीट कर दिया था पूरा। So you were sticking to the word limit in ESI and FM? Ma'am, for example, like 400 words, I used to write 300 to 350 words, and for Okay. 600 word question, I used to write 550 words approx. Okay. That's nice. So for the ESI, you have told about the months also that you started the preparation from January till June 15th. So that was like 6 months, we can say. मैम ये सोर्सेज थे मेरे 6 मंथ्स की। मैम प्रिपरेशन मैंने इन दो की, ये सारा कुछ मैंने प्रिपेयर अप्रैल एंड मई और जून में, इन 3 महीनों में किया Acha. था। That is good. Which scheme? Okay, then we can move forward. ESI objective you were covering with the GA preparation, we GA can say. प्रिपरेशन प्लस एड ऑन के लिए मैम मैंने 25 टेस्ट दिए थे, लाइक 5 टेस्ट फ्रॉम एडुटेप एंड सम अदर टेस्ट सीरीज आल्सो। सो मैम जो उसमें क्वेश्चंस आते थे, जो उनकी एक्सप्लेनेशन होती थी, लाइक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते थे। तो मैम जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्वेश्चन मेरे को एक इस बार जो आया था,
वो मैम उसमें मेरे को हेल्प हो गई थी। एक क्वेश्चन भी टेस्ट सीरीज में था जिसमें डायरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन था, एंड सो मैम वो डायरेक्टली आ गया था उसके अंदर। तो मैम मैंने 25 टेस्ट दिए थे ऑब्जेक्टिव के, और उनके जो एक्सप्लेनेशन थी उनसे मैंने अपने नोट्स बनाए थे। मैंने और Okay. कोई रिसोर्स प्रिपेयर नहीं किया था उसके। So what we can learn from Tushar is that practice is must. कि जितना ज्यादा मॉक दोगे, जितना ज्यादा टेस्ट सीरीज दोगे, दैट इज अ ग्रेट वे ऑफ लर्निंग, दैट इज अ ग्रेट वे ऑफ मेमोराइजिंग एंड कीपिंग एवरीथिंग इन योर माइंड। और जब गलतियां होती है तब हम सीखते ही हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट वे दैट वी कैन लर्न फ्रॉम Tushar sir. So now we can move to the FM. Like you were from the computer science background, and so of course the finance and management, it's a like quite different subject. So how did you manage that? मैम लास्ट ईयर तो जब मेरे को लास्ट ईयर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था आरबीआई के लिए, लेकिन मैंने 15 डेज जो मिले थे मेरे को लास्ट 2021 वाले अटेम्प्ट के अंदर, उस टाइम पे मैंने मैनेजमेंट एक सुपरफिशियली रीडिंग कर दिया था, क्योंकि मेरे पास कम टाइम था तो मैम एफिशिएंसी ज्यादा होती है, तो सुपरफिशियली रीड कर देता। मेरे को पता था कि फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है क्या। उस टाइम पे मैंने ईएसआई बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया था। ईएसआई मेरे यूपीएससी के नॉलेज के बेसिस पे गया था मैं। तो मैम तो उस टाइम पे क्लियर तो हो गए थे, लेकिन मेरे फेज 2 में इतने अच्छे मार्क्स आए नहीं थे मैम। बट इस बार मैंने उसको थॉरोली पढ़ा था। Like for management, I read all summary sheets of management. तो Okay. मैम मैंने जिसमें से 4 चैप्टर तो मैम सीडी के टाइम पे मेरे हो गए थे, जब सीडी का मैंने एग्जाम दिया था दिस ईयर जनवरी, दिस ईयर फरवरी एंड मार्च। सो मैम मेरे 4 चैप्टर जो कि सबसे बड़े चैप्टर हैं, मोटिवेशन, लीडरशिप, जनरल मैनेजमेंट एंड वन मोर चैप्टर, मैम वो तो मेरे कवर हो गए थे। मैम जो बाकी के बच्चे थे वो मैंने उसी दौरान किए थे, जो मेरा फेज 2 का और फेज 1 के बीच का जो टाइम होता है उसी के टाइम के थे। एंड मैम फाइनेंस के भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे ऑप्शंस एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, जो सबसे बड़े चैप्टर्स हैं मैम, ये मैंने पहले ही प्रिपेयर कर लिए थे सेबी के टाइम पे। सो मैम इसमें भी मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगा। सो मैंने मैम फोकस डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे किया था इन दोनों के लिए। Okay. And you solely focused on one source. यस मैम, एडुटेक समरी शीट। Okay. So finance and management किसी एक source से is better. यस We मैम। can say that. Because अलग-अलग sources से बहुत ज़्यादा information and that you won't be able to retain. फिर समझना भी it will get complicated instead of getting easy. So for financial management, you are saying that you stuck to the summary sheets of EduTap and then you prepared from them only. For you practiced the questions also, like in the way you were practicing for ESI. यस मैम, आई गिव approximately 20 टेस्ट ऑफ एफएम ऑब्जेक्टिव पार्ट। फॉर डिस्क्रिप्टिव I gave only 5 tests. Okay, but that is also quite a lot for the practice, we can say. So the chapters also Tushar sir has told that these chapters he considered important, and from that he was able to like focus on those chapters. And how did you find out that these chapters are important? मैंने अंकित सर की एक वीडियो देखी थी यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पे उन्होंने ये चैप्टर का सेग्रीगेशन करा था कि कौन से चैप्टर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो मैम वो मैंने देखा था, उसी के बेसिस पे मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी। That is really यही nice. किया था। Okay, and Tushar, now I think we have come to the interview part. We have discussed about the ESI and FM also. So coming to the interview part, how was the interview? Like, was it grilling or cordial panel? मैम मैं कंपेयर करूंगा अपने 2021 के इंटरव्यू पे एंड 2022 के इंटरव्यू पे। सो मैम लास्ट ईयर क्या हुआ था, मेरा इंटरव्यू ओनली 8 to 10 मिनट्स चला था। वहाँ पे मैंने मॉक इंटरव्यू भी कोई अटेंड नहीं किया था लास्ट ईयर। तो मैं गया था, मैं बोला तो एकदम कॉन्फिडेंटली था, वहाँ पे नॉर्मल सब कुछ था, लेकिन मैम उन्होंने मेरे को लास्ट टाइम पे ग्रिल किया था बहुत ज्यादा कि व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई आफ्टर यूपीएससी, सो व्हाई डोंट यू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, यू हैव सफिशिएंट अटेम्प्ट लेफ्ट, है ना। तो मैम ये सब हुआ था उस पे, और भी काफी सारे स्टैटिक टाइप क्वेश्चन पूछे थे लास्ट ईयर उन्होंने मेरे से, जैसे फॉर एग्जांपल कि व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड व्हाट इज इंडियाज रैंक इन इट। मैम सो ये इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आंसर्स कर दिए थे मैंने मैम, बट मैम ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन ही थे, तो मैम ढंग से मैं आंसर नहीं कर पाया। इस जस्ट लाइक क्वेश्चन आंसर राउंड हो रहा था वहाँ पे। सो मैम माय इंटरव्यू मतलब कम मार्क्स मिले थे मेरे को फाइनली, तो 22 ही मार्क्स मिले थे मेरे को फाइनली। सो मैम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था मैम, बट दिस ईयर इंटरव्यू में उन्होंने ग्रिल तो किया था, जो मेरे से आई वाज द लास्ट कैंडिडेट टू गो। सो मैम जो मेरे से पहले गए थे उनसे मैंने सबसे पूछा था कि कैसा कैसा, तो मैम तो हायर एजुकेशन नहीं कर सकते थे, गैप ईयर्स के लिए ग्रिल तो करते हैं वो, कि आप हायर एजुकेशन के लिए नहीं जा सकते थे या आप कोई और जॉब नहीं ले सकते थे। सो मैम कि दे ऑल्सो आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन, बट मैम मैं जैसे ही आंसर करने वाला था तो मैंने आंसर किया भी मैम, उन्होंने सुना भी, फिर उसके बाद उन्होंने बोला ओके तुषार, पास्ट इज पास्ट, है ना, वी कांट चेंज पास्ट, वी विल जज यू ऑन योर टुडेज परफॉर्मेंस। मैम से
this year they told me this. So ma'am, after that they asked many questions. So ma'am, first question I'm not able to answer, but everything else I'm able to answer the questions. That is really nice. So you can say that it was not very grilling this year, but we can say that it was more factual, or from your biodata also there were questions. मैम दोनों टाइम मेरे जो इंटरव्यू था मैम दोनों ही मेरे बायोडाटा से ही था। Hmm. 90% मेरा बायोडाटा। लास्ट ईयर क्या हुआ था, वो जो बायोडाटा का इंटरव्यू था वो टेक्निकल चला गया था कंप्यूटर साइंस में। इस बार अच्छा। भी मेरा पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड था, मतलब Hmm. कंप्यूटर साइंस ही था, लेकिन कंप्यूटर साइंस को इस तरीके से पर्सपेक्टिव से लिया था कि आईटी इज द बैकबोन ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। इस टाइप में मेरा पूरा इंटरव्यू गया था। तो जितने भी Okay. क्वेश्चन पूछे थे, एआई, ब्लॉकचेन Hmm. एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मैम जितने भी थे सारे इससे रिलेटेड थे। और इकोनॉमिक सेक्शन से भी काफी क्वेश्चंस थे, लाइक base erosion and profit shifting, round tripping, tax haven countries, like that. So it was technical, but it was also related to your field also, because whatever you write in biodata. So usually the aspirants say that there were questions from hobbies also. So it was like for that for you also. Sorry, Hobbies. hobbies. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, they asked me about taekwondo. So, ma'am, Okay. I written taekwondo in my achievement column. In hobby section, I wrote, I think, only traveling this time. Last year I wrote reading also, but this time I wrote only traveling. So they asked me about the difference between Sikkim culture and Delhi culture. First, they asked me about the place which I visited last, and I told them Sikkim. Then they told me about. Then they asked me to tell the difference between Sikkim culture and Delhi culture. So मैंने culture बताया, उसके बारे में मैंने education, ये जो डेमोग्राफी, ये इकोनॉमी, ये सब चीज़ों के बारे में बताया मैम, बट दे वर नॉट सेटिस्फाइड, है ना। तो मैम फिर उन्होंने लास्ट क्वेश्चन था ये, तो उन्होंने फिर मेरे को जाने के लिए बोल दिया था। मैम 2021 इंटरव्यू में मैंने बहुत सारी हॉबीज लिखी थी, लाइक वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री, रीडिंग बुक्स। तो मैम लास्ट ईयर उन्होंने मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था हॉबीज के ऊपर, इस बार पूछा था। Okay. और ताइक्वांडो से रिलेटेड भी एनीथिंग और? यस मैम, मैंने अचीवमेंट कॉलम में जो उसमें टाइक्वांडो का एक मेडल लिखा था, जो मैंने अपने रीजनल गेम्स में जीता था कॉलेज उसमें 12th क्लास में। तो मैम उन्होंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज टाइक्वांडो, एंड मैम वही समथिंग उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन थे एक दो, बस यही था। और मैम जो मैंने कमिटीज लिखी थी उससे भी क्वेश्चन पूछे थे, एक दो ओके। कमिटीज। ओके। एंड योर इंटरव्यू वाज इन इंग्लिश और हिंदी? मैम इंग्लिश। इंग्लिश। ओके। मैम ओके। दिस ईयर आल्सो दे, मैम मैंने स्टूडेंट से कि वो बहुत सारे स्टूडेंट से एक्सटेम्पोर करने के लिए बोल रहे थे, लाइक दे सेड मी ओके तुषार, वी विल गिव यू टॉपिक, AI will overtake mankind by 2070, you have to talk on this topic for 2 to 3 minutes। so मैम एक्सटेम्पोर भी होता है इसमें। Okay, so that is new, I guess. The aspirants must have heard it, that extempo can also be there. That is upon the interviewers that are taking it. So, how many members were there in the panel? मैम 6 members, 1 Okay, female and 5 male। okay. And were there any questions related to psychology or something like that? no, Oh, technical. It was more technical and from your biodata it resume was only. more on technology part, computer science part। Okay. Okay. So I can say that, yeah. So any message for the aspirants? Now we are coming to the end of the session. मेरा यही मैसेज रहेगा कि बेसिकली सबसे डिफिकल्ट स्टेज इसकी फेज 1 है, जिसमें बहुत सारे बच्चे रह ही जाते हैं, उसको क्लियर ही नहीं कर पाते। फेज 2 इज इजी, मतलब फेज 2 में आप प्रिपेयर कर सकते हैं एक लिमिटेड सोर्स से भी, लेकिन मैम फेज 1 के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, लाइक क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ भी बच्चों की क्लियर नहीं हो पाई। तो मैम हाँ. तो मैं यही बोलूंगा कि इंटरव्यू के बारे में अभी से ना सोचें। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि इंटरव्यू में, मैंने भी सोचा था ये लास्ट ईयर, पर लेकिन मैंने ये सब चीजें इस वाले अटेम्प्ट में, जब मैं इंटरव्यू स्टेज पे पहुंच गया तब मैंने इसके बारे में सोचना चालू किया था। उससे जब मैं फेज 1 और फेज 2 दे रहा था, जब मैंने उस टाइम पे ये सब चीजें नहीं सोची थी। तो मैं फेज 1 फेज 2 पे क्लियर करने के बाद ही ये इंटरव्यू के बारे में सोचना चाहिए। मैम ये 2 एडवाइस देना चाहूंगा। Yeah, that is really good that the aspirants should know that first try to clear the phase 1, then phase 2, and then move forward to the interview. So the marks, the interview marks, you have told about the previous one, no? Previous year, 22 months, previous year। Okay. So the marks are released for this one right now? No This ma'am, one, no, marks ma'am? was not released this year। Yeah, this one, the marks are not released. Some a student is asking, so I also got confused. So now
Yes, so that is really great. The message that you have provided us, that yes, just focus on step by step, and then you will reach to the goal that you want to achieve, as well as any motivation that you want to provide to the students that have been preparing for such a long time. Like you have also given so many exams, I can say. After a period, we can say that mind gets tired. So how can you maintain this pace of studying, this pace of learning? मैम टाइम के साथ हमारी इंटेंसिटी कम होती जाती है पढ़ने की, सो Hmm. मैम मैंने लीजर टाइम के लिए मैम आई यूज्ड टू वॉच लॉट्स ऑफ टीवी सीरीज एंड आई यूज्ड टू टॉक अ लॉट विद फ्रेंड्स, सो मैम यही मेरा लीजर टाइम के लिए था। लेकिन पढ़ाई के टाइम पे मैम मैम एक और चीज़ कहना चाहूँगा मैम यहाँ पे कि पर्सनैलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक माई पर्सनैलिटी इज डिफरेंट। लाइक मैं 2 महीने के लिए फुल इंटेंसिटी के साथ पढ़ सकता हूँ एज कम्पेयर टू 6 मंथ्स कॉन्स्टेंटली। सो मैम मैं ज़्यादा फोकस अपनी स्ट्रेंथ पे ही करता था। मैं जैसे से अगर मैं जनवरी से आरबीआई के लिए पढ़ता तो शायद मेरी इतनी पढ़ाई ना हो पाती, तो मैंने पहले सीबीआई के लिए पढ़ा उन 2 महीनों में, ताकि मैं बिजी रहूं एंड देन फॉर आरबीआई। Yes, so you have to focus on yourself also, that how you are, and then you have to formulate your own strategy. You can take the important points from different people, from different topics, and then you have to formulate your own strategy, like Tushar sir has also said. So I think we can conclude now. And thank you so much, Tushar sir, for coming. And it was really great talking with you. थैंक यू Uh, मैम, थैंक यू सो मच। yes, thank you so much for coming. So we will be concluding the session. Thank you, everyone,